अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग cs604 के MCQs रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट MCQ है जी हमारे पास कि फाइल्स दैट स्टार्ट विद अ। तो जैसे कि मैंने शुरू पहले पार्ट में बताया था कि इसके कि मैं जो अब डायरेक्ट इसके आंसर्स बताऊंगी। आपको पहले 4 ऑप्शंस नहीं बताऊंगी बल्कि इसके डायरेक्ट आंसर्स ही दे रही होंगी। फाइल्स दैट स्टार्ट विद द fill in blank in a Linux directory structure known as hidden file। तो वो कौन सी फाइल्स हैं जो शुरुआत में यूनिक्स और लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर होती हैं? वो किस किस्म की होती हैं? दैट इज डॉट फाइल्स दैट स्टार्ट विद डॉट। वो फाइल्स जो स्टार्ट होती है ना डॉट से, यूनिक्स और लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर, उन्हें हिडन फाइल कहा जाता है। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ fill in the blank process, while the new process are called fill in the blank process। जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं किसी प्रोसेस को तो हम उसे पेरेंट प्रोसेस कहते हैं। जब वो बन जाता है, जो नया प्रोसेस हमारे पास आता है, दैट इज चाइल्ड प्रोसेस। fill in the blank buffer places no practical limits on the size of the buffer। तो वो कौन से बफर प्लेसेस हैं जिनके अंदर कोई प्रैक्टिकल लिमिट्स नहीं होती on the size of the buffer, that is unbounded। The fill in the blanks are used for communication between related or unrelated process on the same system or unrelated process on the different system, that is BSD sockets। A fill in the blank is an abstract key for accessing a file, that is file descriptor। अगेन हमारे पास रिपीट आया कि करंट प्रोसेस की स्नैपशॉट जो हम करंट प्रोसेस के अंदर ले रहे होते हैं, उससे कौन सी कमांड यूज हो रही होती है? वो दैट इज PS। You can display all the signals spotted by your system along with their number by using the which command। by using which command आपके पास अगर आता है तो आप लिखेंगे kill 1। The time it takes for the dispatcher to stop one process and start another running is known as dispatch latency। First come first serve, FCFS। अगर आपके पास आता है ना what FC and FS stand for what, तो आप लिखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। शेड्यूलिंग, ये कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? तो दैट इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव जो है वो शेड्यूलिंग वो है जी FCFS। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी, ये प्रिमिटिव भी होता है और नॉन प्रिमिटिव भी होता है। प्रिमिटिव जो शेड्यूलिंग होता है ना, अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव फिल इन द ब्लैंक शेड्यूलिंग इज समटाइम कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो ये हमारे पास आता है जी SJF, दैट इज सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। The basic purpose of fill in blank is to help the user to utilize the hardware resource for completing different tasks in a simplified manner, that is operating system। OS help manage the following except bus speed of the system। अगर हम बात करते हैं OS की तो ये मैनेज करता है हर चीज़ को सिवाय बस स्पीड ऑफ द सिस्टम की। Fill in the blank scheduler select the process from the job pool and put them in the main memory, that is long term। ये repeat था। Parent process calling fill in the blank system call will be suspended until children process terminate। तो वो वेट होता है। ये भी हमारे पास रिपीट में था। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। End process critical section problem can be solved by using the bakery algorithm। अब ये बेकरी एल्गोरिथम के अंदर जी ये प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। Fill in the blank is a piece of code incorporating process in which the process may update shared data, that is variable file database, that is critical section। तो ये critical section कहलाता है। Round robin algorithm is similar to, ये हमारे पास FCFS होता है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्स के अंदर ये सिमिलर होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं शेड्यूलिंग की।
इसके बाद है जी हमारे पास DOS is a single user operating system. Is it true or false? तो it's a true. A process is said to be a critical section if it executes code that manipulates shared data. तो ये true है या false है? It's a true. When process open its first file, expliciting it will get descriptor number. तो जैसे वो first file उठाएगा ना तो उसका descriptor number 3 आ जाता है. A major problem with priority scheduling algorithm is starvation. Our thread within a process share the different address space. Fill in the blank display information about top process, that is top. The scheduling of fill in the blank are done by the operating system, that is kernel thread. In Unix, Linux, by default, the standard output file is attached to the screen. POSIX is a standard developed by ANSI. तो जब हम POSIX की बात करते हैं या यूँ समझ लें POSIX, तो इसमें स्टैंडर्ड डेवलप बाय एनसी की अगर हम बात करते हैं एनएसआई दैट इज आईएसओ ये इसका नॉट श्योर था बट दैट इज मैंने इसे दोबारा चेक किया तो ये आईएसओ बना. फिर इन द ब्लैंक जो है वो बेसिस फिर इन द ब्लैंक इज द बेसिस ऑफ क्यूइंग थ्योरी विच इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड टू एनालाइज सिस्टम इन्वॉल्व क्यूज एंड सर्वर्स. तो इसका आता है लिटिल फार्मूला. Fill in the blank is a solution to the problem of indefinite blockage of low priority process, that is aging. The priority of a process can be changed using nice command. अब कौन सी कमांड यूज की जाती है? NICE. Batch programs are usually which programs हैं? तो ये नॉन इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं. अब प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस के अंदर क्या होता है जी? जैसे कि हम सबको पता है प्रोसेस के अंदर होता है वन और मोर थ्रेड्स, कोड, डेटा, एवरीथिंग. तो हम इसका आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ द गिवन. प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स भी होते हैं, कोड्स भी होते हैं, डेटा भी होते हैं. जब हम थ्रेड्स की बात करते हैं तो सिंपल एक थ्रेड नहीं होता, एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स भी यूज़ हो रहे होते हैं. फिर इसके बाद है जी यूज़र XII11R6 is used by the X window system. That is true or false? Is it true. Command display the content of current working directory is IS. ये repeat था हमारे पास. Linux using fill in the blank directory to store system configuration file. तो store जब वो कर रही है तो वो etc files use कर रही होती है. User mode can run the privilege instruction, that is 1. If your processor does not have two slots empty in per process file descriptor table, then your fill in the blank will fail. That is system call will fail. That is pipe. First fill in the blank entry and per process file description table are used as soon as the process is created. That is 4. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी. काइंडली गाइस वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक भी किया करें. The number of process completed per unit time is called throughput. The procedure, the time at which the process finished working minus the arrival time of the process minus CPU बस फॉर दैट प्रोसेस विल हेल्प टू कैलकुलेट. अब ये हमें एक बता दी गई स्टेटमेंट. तो आपसे पूछा क्या कि ये किस किस्म की हेल्प करती है, क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए? तो ये करती है जी प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग. OPT is used for storage large application. Is it true or false? Is it true. फिर द ब्लैंक इज अ virtual directory in Unix and Unix. तो अब virtual directory की जो हम बात करते हैं दैट इज proc, यानी PROC. प्रोसेस होता है जी हमारे पास. द होम डायरेक्टरी फॉर सुपर यूजर इन लिनक्स एंड यूनिक्स इज होम डायरेक्टरी. जब हम बात करें तो कभी भी होम मत कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज रूट. लिनक्स जो है वो ट्रीट करता है डिवाइसेस को एज अ फाइल. ट्रू और फॉल्स? इज ट्रू. एन एब्सोल्यूट path name start with the root directory. हमें root directory बताई गई है that and relative path name start with your home directory. Is it true or false? Is it true. A path name is a list of directories separated by root
डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी का हमारे पास सिंबल था, ये देखिए हमने यहाँ पे देखा। फिर इन ब्लैंक डिटरमिन हाउ टू डू समथिंग, मैकेनिज्म डिटरमिन करता है कि कैसे हमने काम करना है। User goal of OS is that it is easy to use, reliable, safe or fast. It's true or false? It's true. We can install and run multiple OS by using VMWR. True or false? It's true. इसके बाद ये हमें बताया जाता है कि macOS, Xserver, QNX, OS2 and Windows NT are example of OS based in, तो ये किसके अंदर आता है? माइक्रो कर्नल के अंदर आता है। In layered approach of OS, the layer highest layer is user interface layer. Is it true or false? जब हम लेयर अप्रोच की बात कर रहे होते हैं ना ओएस के अंदर, जो हाईएस्ट लेयर होती है वो यूज़र इंटरफेस लेयर होती है। याद रखिएगा, जो हाईएस्ट लेयर होती है वो यूज़र इंटरफेस लेयर होती है, तो इट्स ट्रू। जो लोअर लेयर होती है ना, हमने शुरू में देख लिया था, दैट इज़ हार्डवेयर लेयर, वही आगे हमारे पास दोबारा आ गया। Operating system is manager of hardware resources. Is it true or false? So it's a true. An operating system is a control program that manages the execution of user program to prevent error and improper use of computer. So it's a true or false? It's a true. The bottom-up view is that operating system is a resource manager who manage the hardware and software resource in the computer system. Is it true or false? So it's a true. इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि व्हाट विल डन, तो ये हमें क्या चीज़ बताती है? पॉलिसी हमें बताती है कि व्हाट विल डन। मैकेनिज्म बताता है कि किस तरह काम करना है, पॉलिसी बताती है कि क्या काम करना है। कॉपी 5212 इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS व्यू, तो ये टॉप डाउन OS व्यू है हमारे पास। The top down view is that it is a program that acts as an intermediary between a user of computer and the computer hardware and makes the computer system convenient to use. Is it true or false? So it's a true. Managing secondary storage involve all the following except, तो ये हमारे पास आता है prevent overwriting. The purpose of operating system is to generate executable programs and to execute them. Users are the people, mechanism, machines and a computer that use the hardware resources. That is true. Database, compiler, video gaming are example of application. Which of the following is not an operating system? Database जो होता है वो operating system नहीं होता। Operating system enable the user to use the hardware resource true. अभी मैं एक लड़की का कर रही थी LMS हैंडल, तो उसमें जो MCQs थे उनमें काफ़ी ज़्यादा ये वाले, मतलब एक दफ़ा उसका ये भी MCQs आया और इसमें बहुत सारे ऐसे MCQs थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आप लोग गौर से देखिएगा, ये आपके पेपर में आ जाते हैं। Operating system enable the user to use the hardware resource true or false? Is it true? Which of the following is not hardware resource? तो OS जो है वो hardware resource नहीं है। Hardware provide basic computing resource. Is it true or false? तो is it true? जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, तो ये राउंड रॉबिन होता है, यानी कि राउंड रॉबिन जो है वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाता है। अब प्रायोरिटीज ऑफ प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास कर्नल के अंदर आता है, जिसमें ग्रुप्स होते हैं वो रिमेन फिक्स्ड रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड लेटेंसी, तो ये हमने पहले देख लिया था, इट्स कॉल्ड फॉल्स, तो ये हमारे पास फॉल्स है। In Unix and Linux, by default, the standard input file is attached to keyboard. Unix और Linux के अंदर जो default standard files होती हैं input, वो keyboard के साथ होती हैं। जो nice value होती है ना, वो हमारे पास help करती है assign करने के लिए priority। जो small integer होता है वो show करता है highest priority of the process in CPU scheduling। अगर हम सिस्टम की बात करते हैं कि जो कि सेफ स्टेट में नहीं है, तो उसका मतलब हुआ कि उसके अंदर कोई डेडलॉक नहीं है। क्या ये ठीक है कि गलत? तो ये फॉल्स है। देखिए, अगर वो सेफ स्टेट में नहीं है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर डेडलॉक है। अ डैश लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लेम एज इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब जो प्रोसेस है ना, जो होल्ड करता है एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स दैट आर करंट हेल्ड बाय द
currently being held by the process is known as hold and wait. होल्ड कर रहा है ना, और फिर वेट भी कर रहा है, तो यहीं से हम निकाल लेते हैं होल्ड एंड वेट. अब इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ए जो है वो क्या है, दैट इज क्लेम एज, जिसमें पी आई टू जा रहा है आर जी की तरफ. वो इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोसेस पी आई है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स को जो कि आर जे पे मौजूद है कि फ्यूचर में मुझे आप अपनी एक फाइल दे दें. इसके बाद है जी, इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्स टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर and still avoid a deadlock, then it is said to be invested in a safe state. A condition where a set of block processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set, is termed as deadlock. The following is not a classical problem of synchronization. तो वो कौन सी synchronization की problem नहीं है? That is counting semaphore problems. अब जो इंटीग्रल वैल्यू होती है ना हमारे पास, वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर कैन रेंज ओवर एन अनरेस्ट्रिक्टेड इंटीग्रल डोमेन. ये हमारे पास एक बहुत लेंथी सा एमसीक्यूज था. द कंडीशन इन विच अ सेट पी जीरो से लेकर पी एन तक ऑफ वेटिंग प्रोसेस मस्ट एग्जिस्ट सच दैट पी जीरो जो है वो वेटिंग फॉर रिसोर्स दैट इज़ हेल्ड बाय P1 और P1 जो है वो वेट कर रहा है रिसोर्स के जो कि P2 से है, और इस तरह सो ऑन चल रहा है. जो P1 है ना PN1, ये वेट कर रहा है रिसोर्स को जो PN, और जो PN है वो रिसोर्स वेट कर रही है उस रिसोर्स की जो कि P0 से हमें मिलेगी. ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को हम क्या कहते हैं? देखें ये गोल गोल मूव कर रहे हैं ना हमारे पास, तो हम इसे कहेंगे सर्कुलर वेट. इसे हम सर्कुलर वेट कहते हैं. यू कैन यूज द रन फाइल वन कमांड टू फिल इन द ब्लैंक फाइल वन. अब जब रन फाइल कमांड यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिमूव कर रहे हैं फाइल को. द करेक्ट कमांड फॉर कंपाइलिंग सी प्रोग्राम नेम प्रोग्राम सी इन लिनक्स एनवायरनमेंट इज, तो जब लिनक्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो आएगा वो GCC प्रोग्राम डॉट सी. तो इसका हमारे पास आएगा फर्स्ट प्रोग्राम. यूजिंग fork system, we can create a new process in Linux. Cooperating process never share any data, code, memory or state. It's a true false. तो इसे false देखिए cooperate कर रहा है ना, तो वो बताएगा which command display the status of process. तो PS हमारे पास आती है ऐसी command जो कि status बताती है process का. Swapper को हम short term scheduler भी कहते हैं. क्या ये ठीक है या गलत? तो it's a false. हम short term नहीं कहते इसे. Fill in the blank system call is used to write to file or FIFO or any other IPC channel that is write. Write system call जो होती है ना वो हमें बताती है कि आपने इसमें लिखना है. A process A that has finished working but its parent process has also finished its execution. In this state, the process A will be called as zombie process. तो इसे हम zombie process कहते हैं. अब वो कौन सी शेड्यूलिंग है जो अलाउ करती है प्रोसेस को कि वो मूव करे बिटवीन टू क्यूज? तो दैट इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. रॉबिन राउंड एल्गोरिथम जो है वो सूटेबल होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर. कैनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द यूजर लेवल थ्रेड्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? इज अ फॉल्स. इसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यूज आता है कि a fill in the blank or an exception is a software generated interrupt caused either by an error deviant by 0 or invalid memory access or by user request for operating system service. तो ये trap कहलाता है. Which register hold the smallest legal physical memory addressing for process? So that is base register. The mutex semaphore provides mutual exclusion for accessible to the buffer pool and initialized to the value of 1. तो mutex होता है जी हमारे पास इसका आंसर. Binary semaphores are those that have only two values. तो दो values क्या हैं? 0 और 1 होती हैं जी हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा. Physical memory is broken down into fixed size block.
तो इसे हम क्या कहते हैं, जब फिक्स साइज ब्लॉक में फिजिकल मेमोरी को ब्रेक किया जाता है ना, उसे फ्रेम्स कहलाते हैं। और लॉजिकल जो मेमोरी डिवाइड की जाती है ना इनटू ब्लॉक ऑफ द सेम साइज, तो उसे हम पेज कहते हैं। A page table needed for keeping track of pages of the page table is called page directory. The address generated by the CPU after any indexing or other addressing mode arithmetic is called a virtual address. और जो एड्रेस ट्रांसलेट करता है ना MMU से, उसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। Each page is power of 4 bytes long in a paging schemes. Which part of the computer system help in managing the file and memory management system operating system? Which of the following is the correct definition of wait program? तो इसकी correct definition हमारे पास क्या है? wait s bracket while s पे हमारे पास 0 नंबर 0 s, और ये हमारे पास इसकी एक correct definition हमारे पास आ जाती है। इसमें loop नहीं आ रहे होते। In deadlock detection and recovery algorithm, deadlock exists in the same system if and only if the weight of a graph contain a cycle. तो ये साइकिल के अंदर कर रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं बोल के थक गई हूँ, I'm so sorry. A fill in the blank register contain the size of the process, that is limit register. लिमिट रजिस्टर है वो ऐसा रजिस्टर जो कंटेन करता है साइज ऑफ द प्रोसेस। The wait for a graph scheme is not applicable to resource aggregation system with multiple instances of each resource type, that is wait for graph. Fill in the blank algorithm is used to deadlock avoidance banker. Banker ऐसा algorithm है जिसके अंदर हम deadlock avoidance को avoid कर सकते हैं। What do we name to an address that is loaded into memory address register of the following, that is physical address? Cache is non-volatile memory. Is it true or false? It's a false. A system call is an entry point into kernel code. A system call is, क्या है system call? ये एक entry point है into kernel code. तो ये था जी हमारी वीडियो। ये आपके मिड टर्म रिलेटेड थी। इसके बाद आप MCQ इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पेपर में जितने MCQs आएंगे वो इसी में से आ रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।